सब तो शो हो Right, जाता है सर। सर बस इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि सर, हाँ now सर go अब शो show हो the गया है सर। button. This create widget आपका बटन है, राइट? अब पेज लेआउट पे जाइए। सर यहाँ पर तो शो हो रहा है सर। मैं सर ऐड करता हूँ ना सर, वहां पर शो नहीं हो रहा था Hold जब on, मैं। hold on, hold on. Right. Where is that ये रहा button? सर, ये क्रिएट Mobile विजिट and नाम से। lightning action. Create widget. This is visible. यस सर। Okay, now go to that buttons, links and actions. Open that button. Okay, now go back on the UI. Now it is displaying, right? Enable the feed tracking. सर ये सब शी अब तक हाँ, अब हिडन हो अभी गया सर। ड्रॉप डाउन पर सिलेक्ट कीजिए। तो कौन सा ड्रॉप डाउन सर? वो जो डाउन एरो जो है उस पर क्लिक कीजिए। ओके ओके सर। Okay, so the thing you will see here, how many buttons are visible here? 1 2 3 4 5 सर, मैक्सिमम सर 10 या 10 होंगे सर, आई थिंक। 4 है 10 है ऊपर है आपके, सर right? और। Now go to हाँ that सर। page layout. Go back to the feed. Go back to the feed. ओके ओके सर। Disable कीजिए feed को। Now refresh this. सर अब शो होता है सर, ये सब प्रॉब्लम आ रही है सर, Right. केस और Now ऑर्डर की। click on that. Expand that one also. सर कहाँ पर सर? इसमें ही सर? हाँ, वो ड्रॉप डाउन को क्लिक कीजिए। हाँ सर। Right. So आप देखेंगे, अब आप पेज लेआउट पे जाइए। Right. Now here, how many buttons are here? मैनी सर। क्रिएट विजिट पोस्ट लॉगिन। हाँ सर, काफी है सर। Right. So what happens? There are a lot of buttons here, like submit for approval, then follow, poll, all of these things, right? जो feed tracking के साथ साथ उनका priority gets changed. Okay, यस due सर। to what is happening is inside that overall list of say I say 15, 16 buttons here, आपका create visit है. यस सर। Okay, but because there are so many actions, it does not, which is why, see, the recommendation should always be, kind of have very less actions. Like, जो आपके visible होने चाहिए, जो आपको पता है, वही इस panel में रहे, राइट सर। right? जैसे ही आप feed tracking ऐड करते हो, वहाँ पे कुछ actions हैं, जैसे follow वगैरह का है, जो वहाँ पे highlights panel पे automatically ऐड हो जाते हैं. हाँ Now, हाँ सर, along with that, डाउन what happens? ये जो यहाँ पे जो buttons हैं, right? इनमें से कुछ आप अभी भी जाके दूसरे टैब पे जाके देखिए, इनमें से कुछ you won't be able to see. हाँ यस सर, हाँ चेक किए थे सर मैंने। यस सर। हाँ, but those should be there. So what happens is वो ordering होता है, उसके basis पे जो sequential 10 है पहले उस time पे that get pushed. Now with feed tracking जब आप enable करते हो तो वो आपका feed tracking is from what? From chatter, ओके। right? तो वो chatter का क्या होता है, वहां से basically kind of user notification, kind of सोशल मीडिया की तरह चलता है वो, right?
फीड अपडेट जाता है लोगों को कि ये इसने ये पेज अपडेट किया, इसने ये रिकॉर्ड अपडेट किया, राइट? सो ओके सर। वंस यू इनेबल दैट, वो क्या होता है, ऑन द केस लेवल, ऑन द रिकॉर्ड लेवल भी कुछ फंक्शनलिटीज एक्टिवेट हो जाती है, लाइक दैट बटन यू सी विच इज फॉलो। अभी आपको वो दिखेगा नहीं क्योंकि फीड पर ट्रैकिंग सर ही अगर डिसेबल है। अगर सर क्लाइंट पे अगर सर कैसी कोई सिचुएशन प्रॉब्लम आ गई तो सर इसको टैकल कैसे करेंगे कि हमें फीड भी चाहिए और ये बटन भी या चाहिए, तो सो ऐसा दिस कोई। इज दिस या सो दिस इज योर डिजाइन प्रॉब्लम, राइट? जब आपका ओके। फीड चालू हो रहा है उसके बाद भी वहां पे 10 एक्शंस आपको दिख रहे हैं, राइट? राइट सर। अब उसमें से द इशू दैट इज हैपनिंग इज जो स्टैंडर्ड एक्शंस हैं, एडिट, क्लोन, डिलीट, क्लोज केस, राइट? दीज विल ऑलवेज बी ऑन हायर प्रायोरिटी, ये पहले ऊपर दिखेंगे, ओके। राइट? सो दैट इज मोर ऑफ अ डिजाइन क्वेश्चन, इट कैन नॉट हैपन। आप पहले से ही ऐसे डिजाइन करोगे ताकि इट शुड नॉट ओके। हैपन। ओके सर, थैंक यू सर। बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि वहां पे उतने ऑप्शंस के बाद और दिखेंगे नहीं, 3 के बाद ड्रॉप डाउन आता है, ड्रॉप डाउन के अंदर और 7 दिखेंगे, ये ऑलरेडी नो, या राइट? राइट So सर। that is something you'll have to, while designing only, you'll have to think. सर थैंक यू सर। This same example ऐसा ही जैसे एक्शन के साथ आपने फेस किया, ऑल्सो थिंक ऑफ जो टैब्स हमारे हैं एक ऐप के अंदर, आप सेल्स ऐप अगर खोलेंगे, राइट? यस सर। तो वहां पे कितने टैब्स नॉर्मल आते हैं? 6-7 आते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप डाउन में चला जाता है, राइट सर। राइट? So by your design strategy only, you have to make sure with those which are important should come first, and those which are not needed वो दिखाने का जरूरत ही नहीं है, और अगर राइट लेस सर। प्रायोरिटी वाले हैं बट दिखाने हैं तो वो जाएंगे आपके ड्रॉप डाउन, राइट? राइट सर। राइट। एनीवन एल्स, एनी क्वेरीज? नो? फाइन। Let me share my screen. Let me know once it's visible. Is developer console visible? Yes. No. No. यस सर। Yes. Yes. Fine. Yes, sir. Good. Right. So then, now there are two things which we'll have to now cover today, right? One is how to enable your method to be called from, you know, UI elements, right? And the other one we would be studying is the basic fundamentals of what is a test class. Okay, so let's begin one quickly. So with respect to LWC or even with Aura, I would tell you, when I'm creating any method, right? So this is your method. What we know is, अगर मैंने static बनाया है, तो then I can call this method using the class name, right? But if I make it non-static, then what I can do is I can call this method using an instant of the apex class. Like I'll write account demo class object is equals to account demo class, and then उसके बाद हम क्या करेंगे? I'll just call this method using that object, right? Now, but ये तो खाली apex से ही कॉल हो सकता है. What if I want this to be, accessible within the UI? Then there is something in Salesforce called annotations, right? And for test class also we'll be learning annotations. But annotation जो होता है, सिर्फ this क्लास जिस मेथड के ऊपर आप लिखेंगे या क्लास के ऊपर भी लिखते हैं कुछ, राइट? तो मेथड के ऊपर आप लिखेंगे @
aura enabled. What this annotation does is it tells Salesforce कि इस क्लास के अंदर let's say there were 5 methods inside this class, but खाली एक मेथड में मैंने लिखा है aura enabled. इससे क्या उसको पता चलेगा कि ये वाला जो मेथड है I have to let it allow to be called from JavaScript UI elements, VF page हो, VF page नहीं sorry, aura component या LWC हो, राइट? जैसे मैंने आपको बोला पब्लिक का यूज करके यू मेक दिस मेथड विजिबल आउटसाइड द क्लास. सिमिलरली @aura enabled यूज करके यू मेक दिस मेथड विजिबल आउटसाइड ऑफ एपेक्स. ओके, so this @aura enabled is an example of an annotation. Now there are few key things जो आपको याद रखना पड़ेगा. One, जब भी आप किसी UI एलिमेंट से किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं, राइट, so then what will happen is first of all एक तो आप मेथड को aura enabled बनाएंगे. दूसरा वो मेथड पब्लिक होना चाहिए. That method should be public, right? प्राइवेट रहेगा तो वो कॉल नहीं कर पाएगा. And two other things you have to remember, always keep in mind. One is if there is any parameter on that method that you have to pass properly. Now अब पैरामीटर पास करने के लिए aura में एक अलग तरीका होता है, LWC में एक अलग तरीका होता है. So that part when we will cover LWC we will know, but just as a point you have to remember that apex method parameter has to be part and it is case sensitive, which means अगर मैंने JavaScript में लिखा है ऐसे field is equals to say name, then it can cause error. Okay, parameter आप पास करेंगे. The other thing which sometimes people end up forgetting and that actually can lead to bugs or issues happening up in your code, which is the apex call, right, when it happens from JavaScript. So at that point of time what happens, JavaScript में suppose 5 लाइन है, 6 लाइन है, 7th लाइन है, फिर 8 लाइन में आए. 8 लाइन में आके जब आपने apex मेथड को कॉल किया, so then control goes completely outside of JavaScript. फिर एपेक्स में कुछ पूरा वो होगा और फिर वो वापस जाता है जावास्क्रिप्ट में, सक्सेसफुली कंप्लीट हो या एरर होने के बाद भी वापस जाता है जावास्क्रिप्ट. सो इन दैट केस देयर इज नॉट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, देयर इज अ ब्रेक दैट हैपेंस. सो फॉर एनी एपेक्स मेथड दैट गेट्स कॉल्ड फ्रॉम द यूआई, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिफाइन समथिंग कॉल्ड अ कॉल बैक. I'm just giving you the concept now. Example we will be doing, so then we will get a better detail of that. But for now, there are the key things जो आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी आपको apex method को enable करना चाहते हो, and it can be in any class, right? Provided it is a public class. Okay, public class होगा तो public class में आप कहीं पे भी method लिख सकते हैं. Previously क्या होता था, Aura component के अंदर जैसे हर एक Aura component का आप एक controller class लिखते थे कि this is the apex class related to this component. तो फिर क्या होता था, आप उस कंपोनेंट से अगर कोई एपेक्स मेथड कॉल करना चाहते हैं तो खाली वही मेथड कॉल कर सकते हैं जो उस स्पेसिफिक एपेक्स क्लास के अंदर है. LWC डज नॉट हैव एनी सच लिमिटेशन. आप एक ही LWC के अंदर 10-12 क्लासेस से मेथड कॉल कर सकते हैं. सो दैट पार्ट इज फाइन. जस्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस method is always @aura enabled. Is this clear? Yes, sir. Right now this part is a bit more tricky. Think of it, so please focus on this here a bit. क्या होता है, आपका ब्राउजर के अंदर there is something called cache, right? Everyone knows that inside browser there is something called cache, Yes, sir. right?
If anyone, Yes, sir. if someone doesn't know, I'll elaborate. क्या होता है, जब भी आप कोई पेज लोड कर रहे हैं तो उस पेज के अंदर से कुछ चीज है जो डायनेमिक है, कुछ चीज है जो स्टैटिक है. थिंक ऑफ इट एज दिस वे. लेट्स टेक एन Yes. एग्जांपल. सपोज आप लोग क्रिकेट मैच का स्कोर देख रहे हैं किसी वेबसाइट पे, राइट, एंड आप 5 मिनट बाद बाद पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं. सो आफ्टर एवरी 5 minutes द नंबर ऑफ बॉल्स में चेंज, नंबर ऑफ ओवर्स में चेंज, नंबर ऑफ रन्स, इवन नंबर ऑफ विकेट्स में चेंज. दैट विल हैपन, राइट? Yes, sir. सो दैट पार्ट इज योर डायनेमिक डेटा. तो जब भी आप चेंज कर रहे हैं वो डेटा अपडेट हो जाएगा, राइट? बट क्या टीम के नाम चेंज हो जाएंगे? क्या 5th ओवर में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, 10th ओवर में क्या वो न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा? No. No. So irrespective of how many times you refresh, they know that for certain duration of time this data will be fixed, and there is another set of data जो उनको पता है हर बार अपडेट हो जाएगा, तो आप हर बार फेच करके लो, राइट? So what browsers do to reduce the time, आपका जो पेज लोड होता है इसमें टाइम को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ जो डेटा है दैट दे नो टू बी फिक्स, उसको वो करते हैं ब्राउजर के कैशे के अंदर स्टोर कर देते हैं. ताकि क्या होता है, हर बार जब आप पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, इवन दो यू आर क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश द होल पेज, इंटरनली पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता है. कुछ चीजें हैं जो वो कैशे से वापस लोड कर लेता है, और कुछ चीजें हैं जो एक्चुअल वेबसाइट से जाके लाता है. सो द डिफरेंस ऑफ व्हाई वी यूज कैशे, समझ आया सबको? एनीवन हैज एनी डाउट्स विद दिस, दैट व्हाट इज कैशे? यस सर, समझ में आया सर. Yes, sir. राइट, Very well. कैशे इज वो डेटा जो ब्राउजर को पता है ये बार बार अपडेट नहीं होगा, तो इसको हम रख देते हैं. नाउ थिंक ऑफ इट दिस वे. जब भी आप LWC वगैरह पे कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, राइट, सो देन यू आर मेकिंग एन एपेक्स कॉल, बैकग्राउंड से डेटा फेच करेंगे, SOQL चलेगा, डेटा अपडेट होगा, राइट, डेटा आएगा, राइट? नाउ अगर सपोज आपके पास जो डेटा आ रहा है, थिंक ऑफ इट एज ऐसा कुछ डेटा है जो आपको पता है फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता, कि हर घंटे भी अपडेट ना हो, राइट, मे बी हर दिन दिन में एक बार करके अपडेट हो, राइट? सो इन दैट केस will that data be considered static or dynamic? Can you repeat, sir? Okay, think of it that आप Salesforce से आप डेटा ले रहे हो. Let's say let's open the back end. Right, let's say ये जो अकाउंट्स है, राइट, मैं एक अकाउंट, मैंने कस्टम सपोज LWC बनाया है, राइट, जो क्या करता है, अकाउंट को ही डिस्प्ले करता है, कुछ डिटेल्स अकाउंट की डिस्प्ले करता है. नाउ आई नो दैट अकाउंट तो भाई रेगुलरली अपडेट होता है नहीं. व्हाट गेट्स अपडेटेड, मे बी अपॉर्चुनिटी रेगुलरली गेट्स अपडेटेड. अकाउंट इज लाइक जब क्रिएट हुआ था तब अपडेट हुआ है. अब अदर देन समटाइम्स वेरी रेयरली अकाउंट का डेटा इज फिक्स्ड इन माय सिस्टम, राइट? कस्टमर का डेटा थोड़ा ना बार बार चेंज होता है, कस्टमर के ऑर्डर्स अपडेट होते नहीं, राइट? सो इफ माय LWC is displaying data of account, right, then can I think of कि अगर मैं यहाँ पे भी कैशे के अंदर ही डेटा स्टोर करूँ तो उससे मेरा डेटा लोड होने में कम टाइम लगेगा, पेज लोड होने में कम टाइम लगेगा. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Because schedule time also, Right. na? Now, because I know that the data will not be very frequently updated. ये मुझे पता है, considering ये मुझे पता है तभी मैं ये सोच रहा हूँ, right? So in that case, even what Salesforce does is वो आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर सपोज आपने खाली डेटा फेच किया है, तो देन हर बार रिफ्रेश पे डेटा फेच करना है कि नहीं करना है. So for that you have to, since the term used here is cache, डाटा स्टोर कहाँ पे होगा, कैशे में होगा, इसीलिए यही एक टैग रहता है cacheable. If you make this true, what Salesforce will do is
इस डेटा से, जिस मेथड से जो भी डेटा रिटर्न होगा उसको वो ब्राउजर के कैशे में स्टोर कर देगा, और कैशे में स्टोर कर रखा है तो उससे क्या होगा, वो बार बार कोई मेथड को कॉल नहीं करेगा। राइट, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So these two attributes you have to remember. So normally क्या होता है in code you will see जो fetch वाले मेथड होते हैं जहाँ पे आप डेटा खाली fetch कर रहे हैं, वहीं पे this you can think of using this, maybe it is used, right? For other custom actions, जैसे पेज पे कोई बटन क्लिक किया तो उसको कुछ चलना चाहिए, so those things you won't cache it, right? Those are user action. खाली पेज लोड पे कुछ हो रहा है तो that thing you can maybe think of using cache. If you don't add this, that means by default cacheable is false. Okay, and अगर आपने aura enabled ही हटा दिया तो what will that mean कि ये मेथड फिर हमारा नॉर्मल उससे कॉल नहीं है, right? Neither from